Hello everyone, good evening to all of you. My name is Samrat Keshari Mishra and welcome to Unacademy. So today we'll discuss about some important topics of Indian polity and constitution for the upcoming PU examination. Before that, these are some important information about the Unacademy platform. These are our plus features. You can learn from your favorite educator. There will be complete exam preparation. There will be regular doubt clearing session, weekly free mock test, free test series, and exhaustive coverage of the syllabus. These are the difference between free and the plus session in Unacademy platform. In free, you will get limited syllabus coverage, limited practice test, limited PDF notes. But in plus, you will get complete syllabus coverage and unlimited practice test. These are our special class features. You can download the Unacademy learning app from the Play Store. The link is given below in the description box. So the classes are going to be interactive. There will be polling for the learners. You can never miss a class because you will get notified in time. You can download the lecture notes and anytime and anywhere you can access to your portal. You can download the digital notes for OPSC examination. These are the ongoing batch courses in Unacademy platform. This is the special batch for OCS Mains examination. In this batch, I will be taking internal security, international relation and economics. Achiever is the foundation batch for the OSSC CGL examination. Rakshak foundation batch for Odisha police examination. Others foundation batch for Odisha PU exam. And most important fact, there is a price drop alert. You can save up to 30%. Use this referral code Samrat Live to get 30% discount on your subscription amount. And this offer is valid for 14th to 16th November only. Okay. So, Marthan ame gote important topic discuss kariba with respect to any competitive examination. Indian polity constitution of preamble. All maximum time preamble la gote question आसे जहाँ भी ले MCQ based बा objective based question जहाँ था से जो कौन सी भी एग्जाम था से प्रियाम्बल गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली आसे तो प्रियाम्बल ऊपर आम डिस्कस करवा ये गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी जेहेतु क्वेश्चन आसे सो प्रियाम्बल को एस्पेक्ट को हमको फोकस करवा दरकार मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रियाम्बल हाउ फार द प्रियाम्बल इज यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द पर्पसेस इट सर्व्स and objectives which are there in the preamble, whether it is a part of the constitution or not, and amendment procedure to the preamble. एतिकी पॉइंट आम इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़िया प्रथम देखिए व्हाट इज प्रियाम्बल प्रियाम्बल कौन आम कौन भी लॉ पढ़ुचे कौन भी स्टैट्यूट पढ़ुचे तार गोटे इंट्रोडक्शन थाए जमी आम गोटे बुक पढ़ते लेट्स से आम जियोग्राफी गोटे बही पढ़ुचे जियोग्राफी बही गोटे इंट्रोडक्शन थाए एंड दैट इंट्रोडक्शन इन केस ऑफ अ लॉ इन केस ऑफ अ स्टैट्यूट that introduction is nothing but known as the preamble. So preamble to the Constitution of India, that is a brief introductory statement that sets out the guiding purposes, principles and philosophy of the Constitution. Then I देखिए इधर क्वेश्चन आसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियाम्बल प्रियाम्बल इंग्रेडिएंट कौन चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी मैक्सिमम क्वेश्चन बा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यार भीतर ही आसे प्रथम कथा प्रियाम्बल इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहूची द पीपल ऑफ इंडिया दे आर द सोर्स जदि हम देखियो प्रियाम्बल स्टार्ट होची केमती ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इट मींस द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द पीपल ऑफ इंडिया नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ द स्टेट्स व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इट चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट आम मन रखा गोटेला सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यार मीनिंग कौन गोटे पर गोटे मु डिस्कस करी देन ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशन कौन बा ऑब्जेक्टिव कौन यार अर्थ होची वेयर वी वांट टू रीच एट कोठी हमें पहुंचया को चाहूची दैट इज ऑब्जेक्टिव और दैट इज एस्पिरेशन सो ये कोची जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स नाउ डेट ऑफ adoption of the constitution of India this is 26th November 1949 this is 26th November 1949 है ना ना हम देखिए व्हाट आर द कीवर्ड्स जहाँ कीवर्ड कहली कौन प्रेजेंट अच्छे प्रियाम्बल फर्स्ट इज सवरेन अर्थ होची इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट कौन कहली इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट यार अर्थ होची इनसाइड इंडिया जहाँ भी रूल रेगुलेशन लॉ फॉर्मुलेशन हम या रेस्पॉन्सिबल किए ना केवल केवल रेस्पॉन्सिबल होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन द सेम वे एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रो अर्थ कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एक्सटर्नल अफेयर्स अदर कंट्री मानक सहित को टाइप रो रिलेशन रहइबो दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो अदर कंट्री कैन इन्फ्लुएंस इट अलग कौन सी कंट्री को इन्फ्लुएंस करें ना। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट सोशलिस्ट जब आम सोशलिज्म पढ़ुचे सोशलिज्म पर मुझे डिस्कसन इकोनॉमिक्स रे इन डिटेल करी सोशलिज्म बेसिकली दुई प्रकार गोटे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ गोटे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रिफर्स मिक्स्ड इकोनॉमी माने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ द सेक्टर्स दे कोएग्जिस्ट कौन कहली बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर दे कोएग्जिस्ट एवं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहले आम कौन बुझे ना देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप एवरीथिंग बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट सब जिन गवर्नमेंट को बिलोंग करे सो इंडिया रे कौन अच्छी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आम गोटे एग्जांपल नबा लेट्स टॉक अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया यदि आम देखा बीएसएनएल इज देयर व्हिच बिलोंग्स टू द पब्लिक सेक्टर और बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एयरटेल जियो वोडाफोन ये सब बिलोंग करते क्या ना प्राइवेट सेक्टर को सो ये एग्जांपल आम देखिले इन इंडिया बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दे कोएग्जिस्ट जहाँ आम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बा मिक्स्ड इकोनॉमी बोली कहूचे। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म अर्थ होची द स्टेट हैज नो रिलीजन द स्टेट हैज नो रिलीजन so all the religions they will get equal support from the state all the religions they will get equal support from the state यहाँ पर आर्टिकल 25 रो 28 फंडामेंटल राइट डिस्कशन है हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ा सेक्युलरिज्म पूरे आउ अधिक डिस्कशन करवा सो इट इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज यूनिक इन इट्स नेचर कहीं कह जाऊँगी हम वेस्टर्न कंट्री मानक देखा religion and government they are completely separate government never interferes in the religious matter of the people but जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा if it is required यदि गवर्नमेंट को दरकार हुए इंटरफेयर करिया पे रिलीजियस अफेयर देन द गवर्नमेंट मे इंटरफेयर so that is unique form of secularism that you will find in India. Then the next is democratic democracy कौन democracy हमें जानी चाहिए this is for the people by the people and of the people. So democracy means जेतबेले we have a government and that represented government that government is elected by us. So the rule by us is democracy. कौन कहली rule by us is democracy. हैला so democracy दुई प्रकार गोटेला indirect democracy और गोटेला direct democracy. Direct democracy रे people directly participate in each and every decision making. People directly participate in each and every decision making but in indirect democracy यदि हम देखिबा एटी people they don't directly participate rather we elect our own representatives who are there to formulate laws for us. Example देखि बुझौ सुनो मन कर आमे कहले कि किछि गोटे लॉ फॉर्मुलेशन होवार अछि एथिरे आमे कोन करबा डायरेक्टली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल पार्टिसिपेट जो मानकर बयस 18 वर्ष रो ऊर्ध्व मानकर सेमानेटी पार्टिसिपेट करिवे जदि हमको 50% रो अधिक से पर्टिकुलर पॉलिसी रो फेवर रे गले ताले हम पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करबा यदि 50% रो अधिक न गले ताले फॉर्मुलेशन करबा नाही गेला बेसिक प्रिंसिपल ये कुछ एमती तो होई परिबनी ऑन डे टू डे लाइफ प्रत्येक दिन हमको लॉ दरकार फॉर एवरी ओकेजन वी नीड अ लॉ सो से लॉ को फॉर्मुलेट करिया पई बा एनाक्ट करिया पई दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस और इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस दैट्स व्हाई आमे कोन करिया वी हैव आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द सेंटर दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एट द स्टेट दे आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बा जाको हम एमएलए बोली कहूचे सो एमपी एवं एमएलए मानु को हम इलेक्ट करचे एवं एमपी एवं एमएलए माने कोन करिवे ना दे विल फॉर्मुलेट लॉज फॉर अस तो माने हम पे लॉ फॉर्मुलेशन करिवे तो आको हम कहले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दुई प्रकार गोटेला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमको यूएस रे देखा जाए एवं पार्लियामेंट्री फॉर्म हमको इंडिया रे देखा जाए या भीतर डिफरेंस कोन ना व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर दैट इज नोन एज parliamentary form and when it is not answerable that is called a presidential form of government democratic form of government बोली कहूचे then is republic कहले हम कोन बुझे एटी दुईटा जिंस मन रखिबे गोटेला हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड आ गोटे होची हेड ऑफ द स्टेट की ना हेड ऑफ द स्टेट होचंदी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट की ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट होचंदी प्राइम मिनिस्टर होचंदी हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो ये कहूँ हेड ऑफ द स्टेट रो पोस्ट बा प्रेसिडेंट पोस्ट व्हेन इट इज ओपन टू पब्लिक रो अर्थ होची जे इलेक्शन दितिला
the person who will win the election, the person will be appointed as the president है ना जेतेबेले when the post of head of the state is open to public, when it is open to public, that is called republic, ताको हम republic बोली कहूचे. And when it is hereditary in nature, when it is hereditary in nature, that is called monarchy, ताको monarchical form कहूचे. monarchical form हमको यूके रे देखियो को मिले एवं republic form हमको इंडिया रे देखियो को मिले. monarchical form हमको यूके रे देखियो को मिले एवं republic form हमको इंडिया रे देखियो को मिले. ये ला गोटे कीवर्ड एको मन रखियो. द नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस गोटे टर्म आसी जस्ट. जस्टिस कोन ना व्हिच इज नॉट इनजस्ट, जे इनजस्ट नुहे हम ताको जस्टिस बोली कहूचे. इनजस्ट कोन ना व्हिच इज नॉट सेम और इक्वल फॉर एवरीवन, दैट इज इनजस्ट. जस्टिस तीन प्रकार, गोटेला सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस कोन ना इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स irrespective of the caste, creed, gender, religion. मैं कहले डेवलपमेंटल स्कीम फॉर SC, ST, OBC ये सब वाला सोशल स्कीम, सॉरी सोशल जस्टिस. बट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ये सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस कौन, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिच एंड पोर, दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस कौन ना इफ यू हैव इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट और एक्सेस टू द पॉलिटिकल ऑफिस, इट मीन्स एनीवन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. किए भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करि परिबो एवं इलेक्शन ने पार्टिसिपेट करि परिबो. को माने पार्टिसिपेट करि परिबे ना जो मानकर बयस 18 वर्ष रु अधिक से माने पार्टिसिपेट करि परिबे. याको कहते पॉलिटिकल जस्टिस. एंड नेक्स्ट इज लिबर्टी. अच्छा लिबर्टी कहले जस्टिस जो टर्म हम पढ़िले आइडिया ऑफ जस्टिस, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन 1917. देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम आनिचे लिबर्टी रो कांसेप्ट. लिबर्टी रो अर्थ होची फ्रीडम. लिबर्टी अर्थ होची फ्रीडम और absence of any restraint or absence of any constraint is called liberty. So absence of any restraint means that should not hamper rights of others. Mu कहले let's say I have the right of freedom of speech and expression. So I cannot use my right of freedom of speech and expression to insult others or to violate rights of others. mu अन्य मानक rights को violate करिया पई मो निज rights को यूज करि परिबनी. तो यार अर्थ होची व्हेन आई एंजॉय माय राइट्स साइमल्टेनियसली आई हैव द ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ अदर्स. देन द नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी कहले हम कोन बुझुचे. इक्वालिटी अर्थ होची एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज. कोनोसी कम्युनिटी को कोनोसी जेंडर को किछ स्पेशल प्रिविलेज मिलिवनी. इट मींस ऑल आर इक्वल. कोन कहलेटी ना ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ. सो इक्वालिटी ये तीन प्रकार सिविक इक्वालिटी ही पारे बा पॉलिटिकल इक्वालिटी ही पारे बा इकोनॉमिक इक्वालिटी ही पारे. सिविक इक्वालिटी ऊपर डिस्कशन होची कोठी ना फंडामेंटल राइट रे बिटवीन आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. या पर मु फंडामेंटल राइट पढ़ला वाला डिस्कस करी. पॉलिटिकल इक्वालिटी ऊपर डिस्कशन होची कोठी ना आर्टिकल 325 एवं 26 रे जो मानकर बयस 18 वर्ष रो ऊर्ध्व दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस जाको यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रांचाइज बोली कहा जाय. दिस इज कॉल्ड एडल्ट फ्रांचाइज. एडल्ट फ्रांचाइज रो अर्थ हो जो मानक बयस 18 वर्ष रो अधिक से माने पार्टिसिपेट करि परिबे लॉ मेकिंग रे. देन इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी ऊपर डिस्कशन है डीपीएसपी रे. डीपीएसपी इज देयर इन द पार्ट 4. डीपीएसपी को हमें बोरो करिचे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड हैला. सो एटी आर्टिकल 39 इकोनॉमिक इक्वालिटी ऊपर डिस्कस करूची. इकोनॉमिक इक्वालिटी कोन इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन कौन पाइना फॉर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हम देखले कोन देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जाको हम इकोनॉमिक इक्वालिटी बोली कहूचे. देन नेक्स्ट इज फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी कोन फ्रैटर्निटी रो अर्थ होची ब्रदरहुड. ब्रदरहुड बा जाको हम भाईचारा बोली कहूचे. सो फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड और it is being in India it is promoted by single citizenship and fundamental duty. So single citizenship माने both for the center and for the state we have a same citizenship, we have a single citizenship. एवं fundamental duty अछि कोड ना article 51A रे. It is there in article 51A हैला. ये प्रमोट करछि काको ना fraternity को प्रमोट करछि. So fraternity it assures two things. One is dignity of every individual. It is promoted by single citizenship and unity and integrity of the nation. ये fraternity promote करछि सब दिन सब. So unity and integrity जोटा हमें देखिले. Now India is being disintegrated or there is disintegration of India.
In the disintegration of India, there is influence of the external forces. There is influence of external forces. External force कौन? यदि मैं कोई first is LW left wing extremism, बाजा को हमें मायोइज्म बोली कोचे, नक्सलवादी कोचे, supported by China. Then militancy in Jammu Kashmir. Militancy in Jammu Kashmir supported by Pakistan. And the third is in Indian form of casteism, जहाँ को western form of classism बोली कहा जाऊँगी, supported by the western countries, basically USA. Hello. So this is how nowadays India is being disintegrated. Now the next point, whether the preamble is a part of the Constitution of India or not. एथिपाई हमको तीनटा केस लॉ मन रखिया पड़िबो, तीनटा इंपोर्टेंट केस लॉ. फर्स्ट होची बेरुबारी यूनियन केस 1960. सेकंड इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973. थर्ड इज एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995. बेरुबारी यूनियन केस 1960 रे द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, but the verdict was it was not a part of the Constitution of India. This is not a part of the Constitution of India. Then in Keshwanand Bharti versus State of Kerala case, opinion was changed and the verdict was yes, it is a part of the Constitution of India. LIC of India case asla 1995 रे it reconfirmed कि preamble is a part of the Constitution of India. Now the question is whether preamble is justiciable or not. Justiciable अर्थ होची in case of any violation, in case of any violation, whether we are free to approach a court of law or not. Whether we are free to approach a court of law or not. ताको हमें कहूचे कौन ना justiciability. So the preamble is non-justiciable. It means in case of violation of any provision of the preamble, we cannot approach any court of law. Then is amendability of the fundamental rights. Then is amendability of the fundamental rights. Amendability of the fundamental rights को हमें कौन बोलची? Now whether the preamble, sorry, amendability of the preamble, I'm sorry, whether the preamble can be amended or not. Whether the preamble can be amended or not. So amendment बुझिया पहले we have to understand article 368. Article 368 रे discuss होइछि how to amend the Constitution of India. So it is dita insert confirm कराइछि. The first one is the authority and the second one is the process of amendment. Process of amendment, authority कहा को दिया है ना, authority has been given to parliament and the process of amendment ऊपर article 368 discuss करूँ. So first point होची if preamble is a part of the Constitution of India, then we can use article 368. If it is not a part of the Constitution, then we cannot use article 368. हमें already पढ़ी सारी. It is a part of the Constitution of India. That's why to amend the preamble we need to use article 368, or it can be amended under article 368 of the Constitution of India. Any doubt? Preamble रो किसी doubt जैसे कि topic हमें पढ़िले, जहाँ topic हमें पढ़िले preamble से तरह किसी doubt होची कि कहाँ को? If you have any doubt, then you can put your question in the comment box. In the chat box, you can put your question. I will definitely answer. तो जत्ती की पॉइंट पढ़िले हमें प्रियम्बल जत्ती की पॉइंट मु डिस्कशन कली एत्ती की पॉइंट इंपोर्टेंट बा ए पॉइंट माने ही क्वेश्चन आसीबे एग्जाम रे. सो ये पॉइंट रो नोट्स करिवो. प्रथम कथा यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल आल्सो फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप, से डाउनलोड करि पारि. And I have already informed, we currently are running with an offer 14th to 16th of November पर्यंत year offer continue करिवो, where you can get discount up to 30%. Use this referral code Samrat Live to get this opportunity. And these are the ongoing batch courses. Already कहि सारिछि. So continuing batch courses on Unacademy platform हमें continue करछो वर्तमान different examination पाई like दृष्टि special batch for OCS, Achiever foundation batch for OSS CGL, Rakshaks foundation batch for Odisha Police, Others foundation batch for Odisha PO, and this is the pricing plan. So that's all for this session. We'll discuss more in the next class. Thank you very much.